नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So welcome back devotees to the new verse. We have discussed about the 5.14.12, the previous verse in the previous lecture. It is available in the playlist. You can check it out too. But this time we will be covering the 13th verse of the 14th chapter of 5th canto of Srimad Bhagavatam. Yes, so without wasting any time, this is a very beautiful verse. Without wasting any time, we will jump into the verse directly. So, Shri Shri Radha Giridhari Bhagwan ki jai, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, आप सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। एकदा शत प्रसंगान निकृतमतिर्युधक श्रोत स्खलनवद उभयतोपि दुःखदं पाखंडम अभियाति। हरे कृष्णा। सो मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है, इट इज़ वेरी डिलीशियस नेक्टेरियन ट्रांसलेशन given by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, and told by Srila Shukdev Goswami to Sri Parikshit Maharaj. So the translation is, sometimes to mitigate distress in this forest of the material world. So if you are currently coming into the video directly, here Shukdev Goswami is explaining about how a material being, the conditioned soul, for greed, he forgets about the Lord and he comes to this material world and how he suffers again and again. So हमने पिछले 12 श्लोक में यही चर्चा की है. And he compares the conditioned soul as a मतलब व्यापारी, एक व्यापारी who has a businessman who has come to a forest out of greed to take this tree or all the goods and sell it in a good price in the city. So as he comes out of greed to the forest, he goes inside the forest and gets lost there in deep inside the forest. So Shukdev Goswami says that sometimes to mitigate distress in the forest of material world, the conditioned soul receives cheap blessings from atheists. Yes. Very, very beautiful wording, very beautiful sentence is used by Srila Shukdev Goswami. हम देखते हैं कि whenever we try to take blessing from some हमको छूना पड़ता है. मैं अभी छोटा हूँ, so some people come, so called elders. I can give some elaboration on it, very beautiful, मुझे याद है अभी. So sometimes some people, some elders come and I have, out of respect, I have to touch their feet. मैं फिर ऐसा सर पे तो नहीं लगाता हूँ, because there is a science behind it, शास्त्रिक science. I will explain it later. That what happens, see, अभी मैं भगवान की दया से, सभी वैष्णव की दया से मैं अभी भक्ति कर रहा हूँ. And as I take the holy name, all the sins I have committed, if I want it or not want it, I have been reading a very beautiful book by Kartikeya Prabhu. He is from ISKCON Whitefield, Bangalore. So he has written a very beautiful book. You can check it out too. Its name is मतलब मैं भूल गया, इसको निकालना पड़ेगा मुझे. It is purity and self-control in sadhana bhakti. So in the introduction and after introduction, the first chapter around that, he explains that first thing which is a barrier, which is
distraction for a devotee, as he cannot he cannot progress in devotional life. It is that he is committing sins. And हमारा अपराध क्या है, कौन सा तीसरा नाम अपराध पता नहीं मुझे, नाम नो बलाद, इट इज अ नाम अपराध, दैट you commit sins and you think that the holy name will mitigate all the sins. ही एक्सपीरियंस दैट भले ही हम चाहे या ना चाहे, हमारा जो भी पाप कर्म है वो नाम जप कर निकाल नहीं वाला है. इफ़ यू थिंक दैट मैं पाप कर लेता पर मैं होली नेम से प्रार्थना कर रहा कि मत निकालो, आई विल सफ़र दैट, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. सो बट it is said, it is confirmed that the material being, all the who are not devoted to Krishna, even if they commit some sin, it will be उनके लिए तो पाप गिना जाएगा कि पाप है वो पाप, थोड़ा क्षणिक पाप, उसका क्षणिक उसको कुछ रिएक्शन भोगना पड़ेगा एंड देन इट इज़ फिनिश्ड. बट फॉर डिवोटीज, वेन एवर द डिवोटी इज कमिटिंग sin, every sin, it is counted as naam aparad for that devotee. So that's why it is very much important for a devotee to become sinless, to not deliberately commit sin in Krishna consciousness. Everything we are doing devoid of Krishna consciousness is to be counted as sin. So that's why the conditioned soul receive cheap blessings from it. So I was on that कि अभी मैं नाम जप कर रहा हूँ, it's natural that the holy name is taking away all the sins and burning it in ash. So and the person, the elder, he is not a devotee or she is not a devotee, and they eat meat, they smoke sometimes, they drink alcohol, and they do everything and does not follow Krishna consciousness. They are atheist, and I am touching their feet. What does touching feet mean? What does touching the feet in our parampara mean? That touching the feet means, as I touch their feet, all my sins will be transferred to them, and their all उनके पुण्य कर्म, everything, they little to little if they have done, everything will be transferred to me. So जितना उनके पास है भी नहीं वो भी उनका चला जाएगा, और जितना था पहले से भरा हुआ पाप उसके ऊपर और पाप आ जाएगा. सो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा कतराता हूँ कि इनके चरण छू भी ना या ना छू करके. सो दैट्स द थिंग. आई रिमेंबर एवरी टाइम मैं उनके पूरे चरण नहीं छूता, और छूता भी तो उसको सर पे या छाती पे तो नहीं लगाता हूँ, बिकॉज आई नो दैट इट विल ओनली उसके उनके लिए ही ये चीज़ बुरी होगी. हम देखा जाए तो इफ़ वी नॉट कंसिडर द एज फैक्टर, इसका उल्टा कर सकते हैं. यस, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, बट एवरी स्मॉल टू बिग डिवोटी, कितने भी एज में हो या ना हो, हमको सारे भक्तों के चरण छूने चाहिए, नहीं तो उनको प्रणाम करना चाहिए एटलीस्ट हमको, इफ़ वी कैन नॉट टच देयर लोटस फीट. सो दैट्स द थिंग. सो that was a very small case study. He then loses all intelligence in their association. Yes, this is the thing. कभी कभी हम देखते हैं कि if a person is very much influential, even if he is, समझ लो कोई है एक व्यक्ति and he is from IIT, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, 12th साइंस का स्टूडेंट हूँ, सो एंड वो IIT किया और अभी जॉब कर रहे हैं. सो that person is very influential to me, and the person tries to associate with influential persons. So if I am not devotee, it is natural that I will associate with him. And association means what? समझ लो अभी right now person is speaking on Bhagavatam, devotee, pure devotee speaking on Bhagavatam. Sometimes a makhi or a fly or a mosquito comes and sits on that devotee. That does not mean that the mosquito or fly is taking association of the devotee, but the person, the people who are listening from that devotee and trying to apply that instruction in their lives, or trying to conduct the things which has been told by that devotee, or उसके ऊपर मनन करता है, that is called association. So अगर मैं किसी भौतिक वस्तु का, नहीं तो भौतिक इंसान का मैं चलो एसोसिएशन किया, सो इट इज़ नेचुरल दैट आई विल लूज ऑल इंटेलिजेंस इन माई कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड माई इंटेलिजेंस ऑल्सो बिकम लाइक द पर्सन's इंटेलिजेंस. सो दैट इज़ द थिंग. चीप ब्लेसिंग फ्रॉम एथिस्ट
और उनका इंटेलिजेंस खो देता है उनके एसोसिएशन में. दिस इज एग्जैक्टली लाइक जंपिंग इन अ शैलो रिवर. एक सेकेंड. This is exactly like jumping in a shallow river. As a result, one simply breaks his head. सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम कर रहे थे ना, देन एट दैट टाइम परीक्षित महाराज तो थे ही असेंबली में, बट सुखदेव गोस्वामी के गुरु वेदव्यास जी के गुरु नारद मुनि एंड ऑल द मतलब उच्च कोटि के हंस परम हंस सारे लोग थे वहाँ पे. सुखदेव गोसाई सेइंग दैट दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ जंपिंग इन अ शैलो रिवर. मतलब एक रिवर है और उसमें बस इतना ही, मतलब इतना ही डीप वाटर है, उस पर जंप करके सिंपली ब्रेक्स हिज हेड. He is not able to mitigate his sufferings from the heat and in both ways he suffers. एक तो अब वो एसोसिएशन कर रहा है, बुरा एसोसिएशन कर रहा है, और वो चीप ब्लेसिंग्स से वो अब क्या कहते हैं, ही इज नाउ सफरिंग. और वो यहाँ से ताप मिल रहा था, भौतिक जगत का ताप, उससे निकलने के लिए, मतलब मैं अपने पिछले लेक्चर्स में ही एग्जांपल देता आया हूँ कि there can never be possible if you apply a material solution to a material problem. If you want to do something, then a spiritual solution is the perfect way to apply on that material problem, or else there is no mitigation to that material problem. So this is the thing. Yes, द ब्लेसिंग, मतलब आई कैन गिव सम 1-2 केस स्टडीज ऑन इट. अभी थोड़ा शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर सकते, बिकॉज वी आर ओनली टेकिंग द ट्रांसलेशन ऑन दिस वर्स, एंड वी विल डिस्कस ऑन द पर्पट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. सो समटाइम्स टू मिटिगेट द डिस्ट्रेस, मतलब यहाँ पे चीप ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एथिस्ट यहाँ पे बात करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी. इवन द श्राप को क्या बोलते हैं, इवन द कर्स फ्रॉम अ प्योर डियोटी और अ डियोटी ऑफ द लॉर्ड इज मच मतलब माउंट मेरू से भी ज़्यादा, पर्वत से भी ज़्यादा ऊंचा है देन अ चीप ब्लेसिंग फ्रॉम एथिस्ट और हु आर नॉट अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. बिकॉज एथिस्ट चलो एथिस्ट भी नहीं समझ लो, कोई भक्ति नहीं करता है, ही इज़ अ मतलब नॉन डिवोटी, ही एक्सेप्ट कृष्णा, मतलब ये मतलब पूरा वो मिक्स्ड डिवोटी. सो हिंदू है, नाम का हिंदू स्टैम्प मारा हुआ, स्टैम्प्ड. अगर आप उसके चरण छुओगे, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलेगा, स्वर्ग जाओ. स्वर्ग जाने का, नहीं तो मतलब सक्सेस मिलने का, नहीं तो पढ़ाई में अच्छा करने का, नहीं तो मटीरियली, मतलब द पॉइंट इज द मटीरियल पर्सन विल गिव मोस्ट ऑफ मटीरियल ब्लेसिंग सो कॉल्ड, एंड उनका ब्लेसिंग कभी पूरा होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं पता. सो सम मटीरियल ब्लेसिंग दे विल गिव, एंड विच विल, एंड Shastras say that Swarg is like a sweet poison, and because you eat it and भले ऊपर से आपको अच्छा लगेगा, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, but that is damaging yourself. And the nerve, all the lower planetary systems are the raw poison. Swarg and all the higher planetary system are like sweet coated poison. Yes, that is the comparison. So ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ मटेरियल विच इज़ टेम्पररी, वो टेम्पररी कुछ ब्लेसिंग देगा, पूरा हो या ना हो नहीं पता, पूरा हो भी गया तो अभी थोड़ी देर के लिए रहेगा, थोड़ा भोग करने को मिलेगा, देन द अगेन सेम टू सेम कंडीशन. बट कर्स ऑफ अ डिवोटी, द कर्स, इवन इफ दैट कर्स सीम्स टू बी वेरी स्ट्राइकिंग, मतलब बहुत बुरा भी क्यों ना लगे सुनने में, बट दैट कर्स इज ऑल्सो वेरी गुड for that material person or a devotee, because it will take him to Krishna. For an example, the best example of the best curse given by the best devotee to the best receivers is Narad Muni cursing Nal, Kuver and Manigriv in Damodar Leela. हम सुन सकते हैं, because when short story है, short story में बताना चाहता हूँ, it is very long, that when the Nal, Kuver and Manigriv, they are the son of Kuver. So they were doing jal krida, wo bhi naked, without any clothes, with women. So what happened, Narad Muni seemed to appear, and he was passing through the forest. The women, they, after seeing Narad Muni, a saint, they ran away. But this
Nal, Kuber and Manigriv, they are so much intoxicated by the drinks they were drinking. They didn't try to cure themselves, और उनको पता ही नहीं चला कि नारद मुनि was there. So Narad Muni gave them a curse कि you foolish people, you become trees. मतलब इतना भी they don't have some, वो क्या कहते हैं, कॉन्शियसनेस, इतना धूत हो चुके थे, यू बिकम ट्रीज. बट वेयर दे बिकेम ट्रीज? इन द आंगन, इन द गार्डन ऑफ Krishna's home, in Vrindavan Dham, in Krishna's home, they became two trees, Nal, Kuber and Manigriv, and the Damodar Lila of the Lord happened, and Lord broke that two trees with that, क्या कहते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं, क्या किससे बांधा था भगवान को, उससे भगवान वो दो पेड़ को तोड़ देते हैं. एंड फ्रॉम दैट the Nal, Kuber and Manigriv appeared, and they offered their respect to the Lord, and then they went to their respective places. So that's the thing. The curse, even from a devotee, मतलब curse, even a curse from a devotee is very beneficial for a person who is if he wants to go to Krishna. Even a curse, but even a blessing from a material person is not worth, मतलब worth it नहीं है. The misguided conditioned soul also approaches so-called sadhus and swamis who preach against the principles of the Vedas. Yes, यहाँ पे क्या है, पाखंड करते. Because my channel is not so much big, मैं तो obviously I can take some names like that Osho people. Srila Prabhupada openly said that Osho, if he comes in front of me, I will kick him with my boots. इतना बकवास फिलोसॉफी उसने बना के रखा है ओशो ने. लोग पता नहीं इतने पागल होके उसको फॉलो क्यों कर रहे हैं. ही मतलब ही सेइंग दैट बिलीफ, मतलब जो बिलीफ नहीं, जब से इंसान बिलीफ रखना बंद कर देगा तब से उसकी ह्यूमैनिटी चालू होगी. क्या बात कर रहे हैं, अरे बिलीफ से तो अभी तुम अपनी माता और पिता के ऊपर तुम वो डिपेंड कर रहे हो. उसको ही मतलब बिलीफ इज द थिंग टू live in this material world, and he's saying that when one removes belief, that then the humanity starts. क्या किस बात का उसको ह्यूमैनिटी बनाना मुझे ही नहीं पता चल रहा. He said that his philosophy was sex to samadhi, that one conducts sex again and again and उससे इतना बोर हो जाएंगे फिर then he will do samadhi. But in Shastra it is said that sex life or satisfying, so-called trying to satisfy someone's lusty desire is like giving ghee to a fire. उससे fire बुझ नहीं जाएगा, the fire will erupt more higher. So without doing that, मतलब उसका भोग भी नहीं करना चाहिए, ना उसको त्याग करना चाहिए. इफ वी हम त्याग भी कर देंगे, then it will come like a pressure cooker, because sex is a need of a human being. So what we must do, we must engage our lust or the lusty desires in the service of Krishna. How there is a very beautiful lecture given by devotees in ISKCON, that how can we offer our lusty desires in the service of Krishna and hence become liberated from this material world. So yes, approach so-called sadhus and swamis. Another example is that Sadguru. वो क्या बोल रहे, क्या मुझे नहीं, यही नहीं पता चला that वो तो निराकार मानते, पता निराकार को भी नहीं मान रहे, ये शास्त्र ही नहीं मान रहे. He was saying in an interview that I have not read Bhagavad Gita, I have not read the Vedas, I have not read the Upanishads. So क्या पढ़ के वो बता रहे वही नहीं पता मुझे. So but people in very much quantity follow these so-called sadhus and swamis who preach against the principle of the Vedas, Brahma Kumari. I don't know what they are preaching. He does not receive benefit from them either in the present or in the future. The so-called sadhus and swamis just take money from him and exploit him for their own pleasure. There is for a devotee, we must understand this, that if you are a devotee, but I am a devotee, a sadhaka devotee, he is so much, कितना एक व्यक्ति, एक भक्त कितना सौभाग्यशाली है, that even if a person, Krishna is saying in Bhagavad Gita that out of thousands and thousands of people, a person may
think of approaching me, and out of those thousands and thousand people, one really approaches me. So this is the fortune of a devotee who is in Krishna consciousness, that out of millions and billions of people there is one Krishna conscious devotee, and that Krishna conscious devotee has the power to preach all those millions and billions of people and convert them into devotees. So we must understand this. And after getting this fortune, what does Sri Chaitanya Mahaprabhu say? That ભારત ભૂમિલે હૈલા મનુષ્ય જન્મ યાર જન્મ સાર્થક કરી કરો પરોપકાર. that you have got this body, you have got the मनुष्य जन्म, आपको मनुष्य जन्म प्राप्त है वो भी भारत भूमि में. अपना जीवन सार्थक करो और सबका परोपकार करो. गिव कृष्णा कॉन्शियसनेस टू एवरीवन. So we must understand this, because our movement is preaching movement. Srila Prabhupada said it is heart's core desire of Srila Prabhupada that all his devotees, all the devotees of the Lord must preach everyone and make everyone in this material world Krishna conscious. Then only Srila Prabhupada, then only our Guru Parampara, and then only our lordships will be pleased. So we must be preaching to this science of Krishna consciousness to everyone. So that was a little elaboration of the beautiful translation of this verse. Thank you very much for listening to this Fallen Soul. Or if there is some fault in my saying, you can just comment in this comment section, and you can also recommend some or you can also recommend some things that I can make a video on. Thank you very much for listening to this video. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय. आप सभी भक्तवृंद की जय. हरे कृष्णा.